नहीं किया। भारतीय संविधान की छत्रछाया में स्वतंत्रता के इन्हीं मानकों को प्रगाढ़ करने की दिशा में माननीय उच्चतम न्यायालय ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। सुप्रीम कोर्ट में समय समय पर अपने निर्णयों से संवैधानिक मूल्यों को प्रगाढ़ किया है। इस यात्रा के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने अनेक उल्लेखनीय माइलस्टोन क्रॉस किए हैं, जिनमें कुछ को मैं संक्षिप्त जिक्र करना चाहूँगा। केशवानंद भारती केस में सुप्रीम कोर्ट ने बेसिक स्ट्रक्चर के डॉक्ट्रिन के सिद्धांत की व्याख्या की। 1980 के दशक में जस्टिस पीएन भगवती और जस्टिस वीआर कृष्ण अय्यर की अगुवाई में एक पोस्ट कार्ड को जनहित याचिका का रूप माना गया। एमसी मेहता केस के परिणाम स्वरूप पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के निर्माण को प्रेरित किया। इंदिरा साहनी केस में ओबीसी के 27% आरक्षण को संवैधानिक ठहराया। विशाखा केस में वुमेन सेफ्टी एट वर्क प्लेस को महत्वपूर्ण आधारशिला रखी गई। 9 नवंबर 2019 को अयोध्या के राम मंदिर जजमेंट को भारत की ट्रस्ट विद डिविनिटी की यात्रा में मील के पत्थर के रूप में हमेशा याद किया जाएगा। 75 वर्ष पहले 8 न्यायाधीशों से शुरू हुई इस यात्रा में अब न्यायाधीशों की संख्या बढ़कर 34 हो गई है। अक्टूबर 1989 में जस्टिस फातिमा बीबी ने पहली महिला जज के रूप में पदभार ग्रहण किया। आज नारी शक्ति हर क्षेत्र में अपना प्रभावशाली योगदान देकर देश का नाम रोशन कर रही है। ये अत्यंत हर्ष का विषय है कि इसी श्रृंखला में उच्चतम न्यायालय में भी वर्तमान में 3 महिला जज अपनी सेवाएं दे रही है। आज इस देश में अमृतकाल में वर्ष 2047 तक विकसित भारत बनने का संकल्प ले चुका है। तब प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में होल ऑफ गवर्नमेंट अप्रोच से न्यायपालिका के साथ सहयोगात्मक रूप से बेहतर जस्टिस इकोसिस्टम बनाने हेतु हम प्रतिबद्ध है। ये हम सभी के लिए गर्व की बात है कि पिछले एक दशक में ईज ऑफ लिविंग के साथ साथ ईज ऑफ जस्टिस को बढ़ावा देकर एक सिटीजन सेंट्रिक टेक्नोलॉजी ड्रिवन मॉडर्न लीगल सिस्टम को बनाने की दिशा ठोस आधार के साथ प्रभावशाली प्रगति की है। जुडिशरी में डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाने के लिए सरकार मिशन मोड में काम कर रही है। इसी का परिणाम है कि भारत वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग व वर्चुअल सुनवाई के माध्यम से डिजिटली जुडिशियल प्रोसीडिंग करने में ग्लोबल लीडर के रूप में उभरा है। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से कुल 2.92 करोड़ वर्चुअल सुनवाई हुई। इनमें से 4,82,941 सुनवाई माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा की गई। यह एक रिकॉर्ड है। अभी हाल में स्वीकृत ई कोर्ट फेज 3 के तहत डिजिटल पेपरलेस व स्मार्ट कोर्स स्थापित करके तथा यूनिफाइड टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म के माध्यम से कोर्ट लिटिगेंट्स व अन्य स्टेक होल्डर को जोड़कर नागरिकों व अदालतों को करीब लाने का सार्थक प्रयास किया गया है। जुडिशियल इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ावा देने की दिशा में भी सरकार द्वारा सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम फॉर जुडिशियल इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर डिस्ट्रिक्ट एंड सबऑर्डिनेट कोर्ट क्रियान्वित की जा रही है। इसके माध्यम से कोर्ट हॉल भी बने हैं, जुडिशियल ऑफिसर के लिए रेजिडेंशियल यूनिट भी बनी है और ई कोर्ट प्रोजेक्ट के अंतर्गत लॉन्च किए गए नेशनल जुडिशियल डेटा ग्रिड आज 34.35 करोड़ केस व 23.80 करोड़ ऑर्डर जजमेंट की जानकारी सिंगल क्लिक पर उपलब्ध करवा रहा है। अंतिम छोर पर गरीब नागरिकों को लीगल सर्विस उपलब्ध कराने हेतु कानूनी साक्षरता व जागरूकता कार्यक्रमों हेतु सेंट्रल स्कीम दिशा को भी हम संचालित कर रहे हैं, जिसके अंतर्गत टेलीला प्रोग्राम के द्वारा 67 लाख से अधिक नागरिकों को प्री लिटिगेशन एडवाइस दी जा चुकी है। इसी तरह से भारतीय गणतंत्र के 75 वर्ष पूर्व होने पर वर्ष भर चलने वाले अभियान हमारा संविधान हमारा सम्मान का शुभारंभ डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर इंटरनेशनल सेंटर दिल्ली में माननीय उपराष्ट्रपति श्री जगदीप धनखड़ जी के द्वारा न्याय सेतु लॉन्च किया गया, जो कि टेक्नोलॉजी के द्वारा समावेशी रूप में कानूनी जानकारी, कानूनी सलाह व सहायता प्रदान करने का एक प्लेटफॉर्म है। न्याय तक पहुंच सुनिश्चित करने के लिए लैंग्वेज बैरियर नहीं बने, इसके लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड भाषिनी टूल्स के साथ साझेदारी की गई है। मैं इस अवसर पर विशेष रूप से उल्लेख करना चाहूँगा कि बाबा साहब डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर जी की वकालत के शताब्दी वर्ष के दौरान संविधान दिवस 26 नवंबर 2023 के अवसर पर माननीय सुप्रीम कोर्ट परिसर में वकील मुद्रा में उनकी 7 फुट की प्रतिमा स्थापित करके उन्हें पूर्वज अधिवक्ता के रूप में याद किया गया। इसके लिए मैं सुप्रीम कोर्ट को बहुत बहुत बधाई और धन्यवाद देता हूं, ताकि न्याय के इस मंदिर में स्थापित वकील की वेशभूषा में बाबा साहब की ये प्रतिमा संविधान प्रदत्त मूल्यों पर चलने के लिए निरंतर प्रेरणा देने के साथ साथ जिम्मेदारी का भी एहसास करवाती रहे।
आज 21वीं सदी के कालखंड में वैश्विक समस्याओं के समाधान हेतु पूरा विश्व भारत की ओर देख रहा है, भारत में अपना मित्र खोज रहा है। सुप्रीम कोर्ट के नेतृत्व में भारतीय न्यायिक प्रणाली की इस यात्रा में देश ही नहीं बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रभावशाली मानक स्थापित कर रहा है। आज विश्व भर के 40 से अधिक देशों की उच्चतम न्यायालयों ने भारत के सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट को रेफर करके अपने निर्णय लिए हैं। ग्लोबल साउथ के देशों में न्याय की पहुंच को बढ़ाने के लिए 27 से 28 नवंबर 2023 को नालसा द्वारा यूएनडीपी, यूनिसेफ, इंटरनेशनल लीगल फाउंडेशन के सहयोग से फर्स्ट रीजनल कॉन्फ्रेंस ऑन एक्सेस टू लीगल एड स्ट्रेंथनिंग एक्सेस टू जस्टिस इन ग्लोबल साउथ का सफल आयोजन किया है। मैं इस अवसर पर उच्चतम न्यायालय के 4 जो जस्टिस दलबीर भंडारी, जस्टिस आर.एस. पाठक, जस्टिस नागेंद्र सिंह, जस्टिस सर बेनेगल राव, जो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में जज के रूप में अपनी सेवाएं दे चुके हैं, जो कि विश्व में भारतीय न्यायपालिका की स्वच्छ, निष्पक्षता और प्रभावशाली छवि का परिचायक है। एक तरफ भारत विश्व की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में तेजी से विकास यात्रा पर गतिमान है, वहीं दूसरी ओर अल्टरनेटिव डिस्प्यूट रिजोल्यूशन के माध्यम से कानूनी मध्यस्थता का हब बनने भारत जा रहा है। मैं इस अवसर पर कानून और न्याय मंत्रालय ने जो विजन 2047 के रूप में जस्टिस फॉर ऑल का लक्ष्य प्रस्तावित किया है, इसके अंतर्गत स्पीडी, अफोर्डेबल एंड टेक्नोलॉजी इनेबल्ड सिटीजन सेंटरिंग डोर स्टेप जस्टिस डिलीवरी सिस्टम के द्वारा न्याय की सुगम पहुंच का लक्ष्य रखा गया है। आज अमृतकाल के अंदर आत्मविश्वास से परिपूर्ण भारत देश आत्मनिर्भर होकर 2047 तक विकसित होने के लक्ष्य पर आगे बढ़ रहा है। इस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए एक मजबूत, निष्पक्ष एवं स्वतंत्र न्यायिक व्यवस्था के आधार पर स्तंभ के रूप में सुप्रीम कोर्ट महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। न्याय का मंदिर बना रहे सर्वोच्च न्यायालय हमारा, न्याय का मंदिर बना रहे सर्वोच्च न्यायालय हमारा, संविधान का रक्षक बना रहे सर्वोच्च न्यायालय हमारा। आज अमृत वर्ष की बस यही शुभकामना है, देश का गौरव बना रहे सर्वोच्च न्यायालय हमारा। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद माननीय मंत्री जी। May I now request the Chief Justice of India, Justice D.Y. Chandrachud, to please share his thoughts with us on this momentous occasion. Honorable Prime Minister of India, Shri Narendra Modi ji, my colleague judges of the Supreme Court of India, Chief Justice Obaidul Hasan, Chief Justice of Bangladesh, Justice Kinley Dorji, Judge Supreme Court of Bhutan, Chief Justice Bibi Rehana Mungli Gulbul, Chief Justice of Mauritius, Chief Justice Bishwambar Prasad Shrestha, Chief Justice of Nepal, Chief Justice Jayant Jayasurya, Chief Justice of Sri Lanka, Chief Justices and Judges of the High Courts, former Chief Justices of India and Judges of the Supreme Court of India, Mr. R. Venkatramani, Attorney General for India, Mr. Tushar Mehta, Solicitor General of India, Mr. Manan Kumar Mishra, Chairman of the Bar Council of India, Dr. Adish C. Agarwal, President and Executive Committee of the Supreme Court Bar Association, President and members of the Supreme Court Advocates on Record Association, Vice Chancellors of the National Law and other universities, members of the Bar, students, young and not so young, you're all students for our whole life, distinguished guests, ladies and gentlemen. Today is a momentous occasion in the history of our nation. The Supreme Court of India marks the commencement of the Diamond Jubilee year of the moment of its inception on 28 January 1950. First and foremost, I thank the Honorable Prime Minister of India, who graciously agreed to be with us, address the audience, and launch the new initiatives of the Supreme Court of India. I also extend my heartfelt gratitude to my esteemed counterparts from Bangladesh, Bhutan, Mauritius, Nepal, and Sri Lanka for joining us in commemorating this occasion together. India has long-standing cultural bonds with them, and the presence of the Chief Justices today strengthens India's ties with their nations. A conversation about this court must necessarily be prefaced with a conversation about the Constitution of India. It was through the Constitution that the people of our country gave to themselves this court.
The Constitution is not just a legal document. Its soul lies in the feeling which it engenders, a feeling of mutual respect towards fellow citizens, a feeling of responsibility in the institutions which it creates. The constitutional ideals permeate the fabric of our nation, guiding the actions and interactions of both the governed and those who govern them. The Supreme Court was established with a sense of idealism that laws would be interpreted by a constitutional court in accordance with the rule of law and not by colonial values or social hierarchies. It affirmed the belief that the judiciary should serve as a bulwark against injustice, tyranny, and arbitrariness. The Supreme Court is an institution of resolution and justice. The fact that people approach it in large numbers speaks to how far we have succeeded in discharging that role. Today is not only a celebration of that one day when the Supreme Court came into being, it also is a celebration of the decades' worth of hard work by succeeding generations of judges and lawyers that went into making this a people's court. In celebrating the history of this day, we must look back and look forward in equal measure. Since the founding of the court, our actions have been guided by Mahatma Gandhi's profound words. Recall the face of the poorest and weakest man whom you have seen, and ask yourself if the step you contemplate is going to be of any use to him. Our decisions, both in the judicial and administrative realms, have been aimed at enhancing accessibility to the Indian judicial system for common citizens. Through its judgments, the Supreme Court has enhanced the rights of citizens by diluting the standards of local standi and by recognizing a new set of rights under Article 21 of the Constitution, such as the right to a speedy trial. On the administrative side, the Supreme Court has been identifying and eliminating as many barriers to justice: unequal access to legal resources, unfamiliarity of the English language, issues of physical accessibility of courts, in order to create procedural fairness. The e-Courts project of the Supreme Court of India attempts to enhance accessibility and transparency of the justice delivery system. At the heart of these initiatives is the desire to transform the judicial system into a technology-enabled, efficient, accessible, and environmental-friendly institution. Let me briefly summarize the achievements of the court in simplifying its process. E-filing of cases. The front desk experience of approaching courts has changed completely. As opposed to lawyers lugging trolley carts of papers, we now have the facility of filing cases at the click of a button. An upgraded version of the Supreme Court's e-filing platform was launched in May 2023. It offers a host of improved features that have made 24/7 filing of cases simpler, faster, and convenient. Nearly 128,000 e-filings have been done so far, with a consistent rise in the share of e-filings compared to physical filings. E-filings are available in 25 states. They have recorded over 29 lakh cases which have been e-filed. With the immense support of the bar and the bench, we were able to swiftly shift to virtual hearings during COVID-19. Even after the pandemic, hybrid hearings continue to be a feature of our courts. That is, any Indian lawyer sitting in any part of the country or the world can argue before this court through video conferencing. This has democratized access to the Supreme Court. It has opened the space for those who are unable to approach the Supreme Court due to physical distance or want of resources. Even yesterday, one of my colleagues joined the bench through video conferencing for a special hearing on a Saturday. Till now, we have dealt with over 5 lakh cases through hybrid hearings. The live proceedings of the Supreme Court Constitutional Bench hearings are popular
and speak to the genuine curiosity that people have towards our courts and procedures. Focus on scanning and digitization. The Supreme Court of India today operates in a near complete paperless mode, with almost all benches using digitized paper books. Judges are provided with scanned, bookmarked, and digitally signed case records, which they access, read, annotate, and preserve for their reference at their residences and in courtrooms. More than 13 lakh legacy and live case records with approximately 10 crore pages have been digitized. Futuristic courts. The Supreme Court has enabled futuristic court technology in 3 courtrooms, and soon other courtrooms shall be equipped with such technology. This technology facilitates paperless proceedings, a comprehensive digital library for the bench and the advocates, state-of-the-art video conferencing, large video walls, smart monitors, and document visualizers, all of which redefine the courtroom experience. Office automation. Adoption of e-office has enabled the officers of the Supreme Court Registry to perform their routine works in a paperless mode. 36 branches of the Supreme Court's registry have been onboarded on e-office, and more than 4,000 office files have been processed online so far. Suswagatam. Launch of the Suswagatam portal has enabled visitors to generate entry passes online in a paperless mode. A total of 1,23,000 entry passes have been generated so far using Suswagatam. We are also transcribing oral arguments in matters before constitution benches, which can be accessed on the Supreme Court website. The Supreme Court has entered into an MOU with IIT Madras to explore areas that can be completely automated and to leverage technology and artificial intelligence for enhancing process efficiency. As we speak today, a team of generative AI researchers at a premier management institute in Mumbai has built an end-to-end demo of an actual open-source Gen AI model trained in public domain motor accident cases. It is trained to automatically extract parameters from petitions, documents, and files, and give a recommended compensation figure. Together, e-filing, digitization, paperless courts, and e-office constitute the golden quadrangle of transformation within whose enabling perimeter the Supreme Court of India is set to uplift the experience of everyone who is either a part of the judicial system or who comes into contact with it. But what is the future? The Supreme Court is soon going to migrate its digital data to a safe, secure, and sovereign cloud-based infrastructure. This would be a shot in the arm for the IT setup of the court. Cloud storage would ensure privacy, integrity, high availability, and secure accessibility of the Supreme Court's domain data. We are also on the verge of opening a war room equipped with technology that would enable the Supreme Court to monitor judicial data of the entire country in real time by using the National Judicial Data Grid and iJuris, both of which were information sharing platforms. For the district judiciary, iJuris has been launched by the Supreme Court to monitor statistics of vacancies and infrastructure relating to the district judiciary. Facilitating free accessibility of judgments for citizens and litigants has always been a priority of the eCourts project. As of today, 36,209 judgments are uploaded online on the eSCR portal in English, out of which about 36,000 judgments have been translated into Hindi, and around 11,000 judgments have been translated to other Indian languages with the help of AI-assisted machine learning. The Virtual Courts initiative has been a game changer in courtroom access and online dispute resolution. Implemented in 20 states, the initiative has received 4.37 crore challans, leading to a total collection of 502 crores of rupees in fines. Interestingly, according to the Electronic Transaction Analyzer of the Government of India, in 2018, eCourt